Good morning, students. Today I am going to start English 2 Standard 5, Unit 10. Enrich yourself, prefix and suffix. Let's refresh. We have already learned how to make new words by adding prefixes and suffixes. Prefixes are elements placed at the beginning of words to modify their meaning. Example, un. Un as a prefix means opposite. So when it is added to a word like kind, un plus kind, that is unkind. It gives a new word which convey the opposite meaning of the word kind. प्रीफिक्स का मतलब है कि हम किसी भी वर्ड्स के सामने अन यूज़ करें और अन यूज़ करने के बाद जो वर्ड होगा वो अपोजिट बन जाएगा, मतलब उल्टा. जैसे हम यहाँ काइंड है तो काइंड में अगर अन प्लस करें तो बन जाएगा अनकाइंड. ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा कि काइंड का अपोजिट हो गया अनकाइंड. थर्ड है सुफिक्सेस आर एलिमेंट्स प्लेस एट द एंड ऑफ वर्ड्स. Suffix are used to change a word from one part of speech into another. Example, joy. Joy plus full equal to joyful. Joy यहाँ पे हमारा नाउन है एंड joyful मिलके बन गया एडजेक्टिव. माइंड, माइंड यहाँ पे नाउन है एंड माइंड प्लस फुल मिलके बन गया माइंडफुल, मीन्स एडजेक्टिव. रीड एंड एंजॉय. This is a letter. Okay, now read 8 Kakatiya Nagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, November 30, 2020. Another. My dear Papa, you will be pleased to know that everything is going well with me. I am now the monitor of the class. Yesterday we had a unique class test in English. We were given particular of two persons called A and B, with the instruction to award 1 mark to each positive trait of mind and -1 for each negative trait in respect to both the person. We were also asked to add up their marks and write whether A has more positive points or B. I am reproducing below the details of the test given of your information, comments and guidance. Okay. A. He is kind. में एक बच्चे ने अपने पापा को लेटर लिखा है और उसने बोला कि मेरी क्लास में एक टेस्ट हुआ था जिसमें हमें 2 ग्रुप मिले थे, ए एंड बी, जिसमें से हमें फाइंड करना था कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव. तो ही इज़ काइंड, तो ही इज़ काइंड वो पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि बोल रहा है वो अच्छा है. एंड ही इज़ अनकाइंड तो आ जाएगा निगेटिव, -1. ही इज़ कोऑपरेटिव, +1. ही इज़ नॉन कोऑपरेटिव, -1. वाई वी सी दिस इज -1? बिकॉज ऑफ नॉन, बिकॉज ऑफ अन. ओके. ही इज़ केयरलेस, दिस इज नेगेटिव वर्ड. एंड ही इज़ केयरफुल, दिस इज पॉजिटिव. ही इज़ ऑलवेज पोलाइट, positive, and he is times impolite, negative. He is interested in politics, positive, and he is disinterested in politics, negative. He handles his personal matters inefficiently, then this is negative because of in. He handles these personal matters efficiently, and this is positive. He is maladjust at his work, negative, and he adjust his work, positive. Okay. Plus point. How many plus point in these groups? So first we count 1, 2, 3, 4. -3. And total points 4 minus 3 equal to 1. In B, how many plus point? 1, 2 and 3. And minus point? 1, 2, 3 and 4. -4.
And what is total point? 3 minus 4 is equal to -1. In my option A has more plus point than B. And as such A has is better personality. मतलब हमारे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट किस में है? यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब ए में है. और प्लस पॉइंट बी से ज़्यादा ए में है, इसलिए ए जो है वो ज़्यादा बेटर पर्सनालिटी के हैं. ओके, रेस्ट इज़ ओके. काइंडली गिव माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू कीतू. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग सून फ्रॉम यू. Affectionately yours, Rohit. The highlighted letters are prefix or suffix. The word placed before the words are prefixes which changes the meaning of the words to which they are added. The words placed at the end of the words like care plus less, care plus full are suffixes which help in changing words from one part of a speech into another. Example: care, verb or noun. Careful means adjective and careless adjective. Okay. Prefix. Prefix means un. The meaning of un is not. An example: unkind, untrue. Meaning is not. And impossible, impatient. Not. Malpractice and malnutrition. None means not, and non-violence and non-cooperation. In means not, inefficient, indecent. Ill means not and without, illiterate and illegal. Dis means away, disappear and disqualify. Miss means bad and wrong, miscarriage and misunderstand. Means without, irrelevant and irresponsible. Okay. Write these words in your notebook and learn. Have a nice day. Bye.